हेलो हेलो। अच्छा सॉरी। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विद मी। कैसे हो आप सब? हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विद मी। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? हेलो हेलो। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल क्लासेस विद मी। एवरीवन, कैसे हो आप सब? हेलो हेलो। हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। हाय एवरीवन। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? हेलो हेलो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल क्लासेस विद मी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल क्लासेस विद मी। कैसे हो आप सब? हाय एवरीवन। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल क्लासेस विद मी। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल क्लासेस विद मी। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल क्लासेस विद मी। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल क्लासेस विद मी। किसी को कुछ भी डाउट हो लाइव स्ट्रीम में आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए मैं आने वाले कुछ क्वेश्चंस को कवर अप कर रहा हूँ।
राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन असाइनमेंट नंबर 4 का। असाइनमेंट नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करते हैं, राइट। लेट्स सी व्हाट क्वेश्चंस डू वी हैव राइट नाउ टू गेट कवर अप हियर। ओके, कैशियर लोकेशन एंड एवरेज ऑफ एम्प्लॉय पॉइंट्स। ओके, ये तो हो गया था। क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है? राइट अ क्वेरी टू फाइंड द टोटल सेल्स इन 2 डेसिमल पॉइंट्स एंड टोटल क्वांटिटी फॉर रिटर्न ऑर्डर्स। क्या क्या बोला गया है उसमें? आपको एक क्वेरी लिखना है जिसमें कि आपको टोटल सेल्स फाइंड आउट करना है। कितने में? 2 डेसिमल पॉइंट्स तक आपको टोटल सेल्स को फाइंड आउट करना है, एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ रिटर्न ऑर्डर, एंड टोटल क्वांटिटी मीन्स टोटल सेल्स। एक तरीके से क्या पूछा है? टोटल सेल्स एंड टोटल क्वांटिटी फॉर रिटर्न ऑर्डर्स, मतलब इस तरीके से होगा। टी सेल्स, टी क्वांटिटी, रिटर्न ऑर्डर। सपोज एक रिटर्न ऑर्डर है, रिटर्न ऑर्डर आईडी 02 जो कि रिटर्न हुआ है। तो कितने का सेल्स का रिटर्न हुआ है? सपोज 20, और क्वांटिटी कितना है? 1। इस तरीके से मतलब हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल सेल्स और टोटल क्वांटिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा फॉर द रिटर्न ऑर्डर्स। मतलब कि आपको ग्रुप बाय देना पड़ेगा रिटर्न ऑर्डर्स का, ठीक है। रिटर्न ऑर्डर्स का आपको ग्रुप बाय देना पड़ेगा स्ट्रेट। सो लेट्स स्टार्ट। क्या हो गया भाई? रिफ्रेश query tools. Okay, right now we have to see how it will.
Wait, right now I think I have to clear it out again. Displays query tools reset.
चलो हो गया। तो यहाँ पे कौन कौन से टेबल्स है पहले उसको हम लोग कवर अप करते हैं। तो इसमें हमारे पास फिलहाल के लिए दो टेबल पे ही काम रहेगा, ठीक है। पहला टेबल क्या है, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम दिस। सेकेंड रहेगा सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम रिटर्न टेबल, कहाँ गया दिस वन, ठीक है। इन दोनों टेबल से ही अपने पास काम रहेगा अभी। क्यों? क्योंकि हमें रिटर्न टेबल और नॉर्मल टेबल से ही काम निकालना है फिलहाल के लिए, सॉरी, राइट। और यहाँ रहेगा स्टोर। अब इसको करेंगे एग्जीक्यूट, इसको करेंगे रिटर्न टेबल का एग्जीक्यूट, ठीक है। अब देखो, सिंपल है। क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने, क्वेश्चन में इन्होंने डायरेक्टली पूछा है कि हमको फाइंड आउट करना है टोटल सेल्स, ठीक है, और टोटल क्वांटिटी किसका, रिटर्न ऑर्डर्स का। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिटर्न टेबल में क्या है, नहीं दिया हुआ है अपने को इसके क्वांटिटी और सेल्स का डेटा, ठीक है। इसीलिए ऑर्डर आईडी बी डॉट ऑर्डर आईडी। अब इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो साइड बाय साइड सारे डिटेल्स हमें मिल जाएंगे, नॉर्मल टेबल के भी और रिटर्न टेबल के भी। अब जब सारे टेबल के हमें डिटेल्स मिल जाएंगे, हम लोग इजीली इसका क्वांटिटी और इसका सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखो, बी डॉट ऑर्डर आईडी, फिर सम ऑफ ए डॉट सेल्स एज रिटर्न सेल्स, फिर सम ऑफ ए डॉट क्वांटिटी एज रिटर्न क्वांटिटी, ठीक है। इस तरीके से। अब यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ग्रुप बाय तो मैंडेटरी है लगाना, ठीक है। ग्रुप बाय हमने दिया और जब इसको एग्जीक्यूट किया, अब देखो यहाँ पे किस तरीके से आ रहा है हमारे पास, सारे ऑर्डर आईडी का डेटा आ रहा है। मतलब जो नल है, नल मतलब जिसमें ऑर्डर आईडी है भी नहीं, ऑर्डर आईडी जिसमें नहीं है ऑब्वियसली, और रिटर्न नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखें, वेयर बी डॉट ऑर्डर आईडी इज नॉट नल, ठीक है। अब इसको करेंगे एग्जीक्यूट, नल हट जाएगा। अरे सॉरी, क्या हो गया इसमें, क्या हो गया? हाँ अब ठीक है। इस पे हमने क्या किया, जितने भी ऑर्डर आईडीज हैं, रिटर्न ऑर्डर आईडीज हैं, उसके रिटर्न सेल्स और रिटर्न क्वांटिटी फाइंड आउट किया। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 डेसिमल पॉइंट्स तक हमें फाइंड आउट करना है, राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ दिस
till 2 decimal point, round of this till 2 decimal point, ठीक है। राउंड अब क्या हो गया इसमें? इसको न्यूमेरिक करना पड़ेगा। न्यूमेरिक, इसको भी न्यूमेरिक, क्योंकि डेसिमल है ना इसीलिए। न्यूमेरिक, अब इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तब आएगा आउटपुट, ठीक है। सो द थिंग इज कि जब ये डेसिमल में रहेगा, इसको जब हम लोग को कन्वर्ट करना है इन 2 decimal point, तो न्यूमेरिक फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सीक्वल का क्या रूल है, डेसिमल को डेसिमल के साथ वो आउटपुट में शोकेस करेगा और न्यूमेरिक को न्यूमेरिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो शोकेस करेगा। दैट इज द रीज़न, ठीक। इन 2 decimal point, तो न्यूमेरिक फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सीक्वल का क्या रूल है, डेसिमल को डेसिमल के साथ वो आउटपुट में शोकेस करेगा। और तो इस तरीके से हम लोग इसको देख पा रहे हैं कि कैसे इजीली हमने आउटपुट फाइंड आउट किया, टोटल सेल्स और टोटल क्वांटिटी ऑफ रिटर्न ऑर्डर्स, दैट टू विद द हेल्प ऑफ इजी लॉजिक एंड इजी टेक्निक्स, ठीक। तो जो कुछ भी डाउट हो इस चीज़ में पूछ सकते हो आप लोग लाइव स्ट्रीम में। किसी को कुछ भी डाउट हो इस टॉपिक रिलेटेड, वो लोग लाइव स्ट्रीम में पूछ सकते हो। आई विल हेल्प यू आउट इन दैट। सॉरी। तो फिलहाल के लिए लेट मी चेक, किसी का कुछ मैसेज या कुछ? नो, नो मैसेज टिल नो। ओके। Let's start with some questions here. Let me give you some Power BI का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पावर बीआई का थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है, सो it will be really easy for you to understand and give you the correct answer for that. So it is like which iterator is correct for row by row calculation? Is it sum x, calculate or divide? ठीक है, राइट। और ये थियोरिटिकल क्वेश्चन है, so if you have good quality logic and all, you can easily answer that thing. If not, no need to worry about, you can just test your skills, right? तो फिलहाल के लिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है वो हम लोग देखते हैं और चलते हैं इसके क्वेश्चन के लॉजिक और थॉट प्रोसेस के बीच में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा राइट अ क्वेरी टू प्रिंट कैशियर लोकेशन वेयर नन ऑफ द एम्प्लॉय हैव सेम पॉइंट्स, ठीक है। राइट अ क्वेरी टू प्रिंट कैशियर लोकेशन वेयर नन ऑफ द एम्प्लॉय हैव सेम पॉइंट्स। पहले ये देखते हैं कि कैशियर लोकेशन और फीडबैक में क्या क्या डिटेल्स हैं एंड ऑल, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट वो देखेंगे हम लोग। कैशियर टेबल, ठीक है। सो इट इज लाइक select everything from this, then select everything from
तो फीडबैक टेबल है हमारे पास, क्या क्या डेटा है? फीडबैक टेबल, ओए ओके, हाय शिवा, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। Welcome to live stream. So we have one query. Why use four dots? मतलब this one क्या? You are asking about this. Is it this क्या? मतलब four dots यही है क्या? Check once. यही चार डॉट का बोल रहे हो क्या? Okay, I think you are asking about this thing only. Okay, yes, चलो कोई बात नहीं. Good question. See, first thing first, let's see what is this thing you are saying. This four dots, what is this called? ठीक है, this is called typecast operator. ठीक है, this is called typecast operator. 13th row, हाँ 13 14th, correct correct, I understood, no worries no worries, I will make sure you understand it. First thing first, what is this thing, this four dots you are saying? What is this thing in our SQL environment? This is called typecast operator. ठीक है, why it is used? It is used to convert a value from one data type to another. ठीक है, मतलब one data type, suppose it is like a data type, we want to convert it to b data type. ठीक है, for this conversion we need this four dots. What is it called? It is called typecast operator. ठीक है, first thing first, in this, see what I'm saying, in post gre sql, when you use any of the data types for this scenario, let me just copy and paste it. It will be easy to understand. In this scenario, if I remove this thing, what will happen, you know? Post gre sql have a rules and regulation. In post gre sql, ठीक है, if this thing which is actually a decimal, which is actually a decimal, it is giving no precision control. Actually what happened in decimal, like normal decimal, ठीक है, मतलब normal decimal data type, normal decimal data type in post gre sql have no precision control. ठीक है, they do not have any precision control. So they do not have any precision control. Why they do not have precision control and how can you understand it? Simply, when you have written the sum of sales, you have found out the answer is like that. Suppose 2018.345762137890. It do not have a precision control and there is no rounding part in this. ठीक है, so keep, so to keep the thing in precision, to keep the thing or the data type, ठीक है, thing मतलब data type, to keep the data type in precision control, that too in decimal, we need to convert the decimal data type to integer. ठीक है, we need to convert that because
in integer we can give a specific number of decimal places. If you do normal decimal na, if you do normal decimal, the output that you are finding out won't give you a specific number of decimal space. So there is no specific number of decimal space. ठीक है, number of decimal space. But due to business requirement, if you need a specific number of decimal point or decimal space, that too in a decimal data type, you have to convert that proper decimal data type into integer. And once you are converted into integer, you can properly give this like comma 2, मतलब comma 2 का मतलब after decimal how many numbers should be there and all. ठीक है, that is the thing, right? I hope you understood it. Let me show you in practical point of view. If you do like this, suppose let me take this. If you do like this, then see the decimal, like it is like coming like this, three numbers after decimal point, two number, three number. There is no precision. If you need precision, you need to give this thing numeric. But suppose you forgot and you have not given this thing, it will give this thing क्या कि function round double precision integer does not exist. For this you have to convert the data type. It is actually showing double precision, and what we are talking about here, precision points. ठीक है, see precision points, precision control. ठीक, so for that you have to convert into numeric, and then you will get the output. ठीक है, sorry, not integer, it's numeric. Numeric, sorry. You have to convert into numeric data type, and then you will get the output. And take this note, it is numeric data type, not integer. I have done a mistake in the understanding point of view. Okay. Okay, we have one more query from Shiv. In MySQL also do same like this. MySQL I don't think does not have this typecasting kind of thing. MySQL does not have this typecasting, that I know. In PostgreSQL SQL they have typecasting, right? Yeah, in MySQL you have to write like this, like cast. You have to write like this, cast, then sum of sales, then you have to write like this kind of thing. And if you are writing here round, then you have to give this point. Okay, if you are writing round, you have to give this point. But in MySQL you have to write cast, sum of sales, and I think here you have to write decimal. I am not that much acquainted with MySQL, but one thing I know is like in MySQL you don't have to use this typecast, means this four dots. You have to write cast like this. You have to typecast, then sum of sales or average of sales, whatever function you want to find out. Then you have to write here decimal and give the decimal format, comma 2. 2 matlab ki after point how many numbers would be there. And if you are giving round, then this thing you have to give, because after round you have to tell SQL environment like how many numbers should be there after the decimal point. Okay, this is the thing. You just check once this one, because in MySQL I am not that much acquainted in this, but one thing I am confirm and I am 100% sure ki in MySQL you don't need to give this four dots, this typecast symbol. You have to directly write cast and then you have to move forward. Hi Lucifer, welcome to live stream. Hi Lucifer, welcome to live stream. कैसे हो? So in PostgreSQL you have to write like this. In MySQL you have to write round. I sorry, you have to write cast.
and then you have to write the function name. It is like that. ठीक है? So this is how things work out in MySQL and in SQL environment. So it is kind of different. But check once about this decimal and this 10 comma 2. Like I have to check once, like is it correct or not. But one thing I am sure, you have to write cast in MySQL. That is for sure. There is no issue in that, and there is no confusion in that. So this is the thing. Okay. So anybody have any more doubt? ओके लूसीफर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, आई एम ओके। आज तो कुछ ज़्यादा ही वर्कलोड हो गया था, अभी भी है वर्कलोड फॉर टुमारोज मीटिंग एंड ऑल, दैट्स वाई थोड़ा लेट हुआ लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने में। और आज भी 9 बजे तक ही लाइव स्ट्रीम रखने का सोचा हूँ मतलब, क्योंकि आगे मीटिंग्स है इसीलिए। सैटरडे संडे है ना, तो दैट्स वाई एवरीथिंग इज़ गुड। तो आज लाइव स्ट्रीम में थोड़ा लेट हो गया, जस्ट टू join the live stream. So by that time, anybody have any doubt in the live stream, they can ask your doubts in the live stream. I am ready to help you out. And by the way, nice question, Shiv Sai. Like Shiv has asked a good question related to this cast and cast type. Good thing. We have one more query from Lucy, और मेरा भी काम चल रहा है। सही है भाई, सही है, दैट्स अ गुड थिंग। बिजी रहना चाहिए हमेशा लाइफ में, दैट्स रियली अ गुड वन। कल इवन दो, कल तो मेरा मेन चीज़ है, मेरा तो काम है ही फ्रीलांस का, प्लस आप लोग का मेंबर्स के लिए ये हिंदी में आई हैव टू मेक द प्रोजेक्ट एज वेल। ठीक है, तो कल ये भी वीडियो बनाना पड़ेगा, प्लस क्लाइंट का मीटिंग है, तो टुमारो इट विल बी रियली अ हेक्टिक डे। बट एनीवेज वी विल डू लाइव स्ट्रीम, ठीक है? तो लूसीफर, इफ यू वांट यू कैन जॉइन आवर लाइव स्ट्रीम एंड वर्क साइड बाय साइड आप काम कर सकते हो, या तो पढ़ाई लिखाई जो भी आपका बिजी रहना है, यू कैन स्टे बिजी एंड यू कैन जॉइन इन माय लाइव स्ट्रीम, ठीक है? और कुछ पूछना उछना हो तो पूछना, ठीक? कल आप लोग का भी काम करना है मेंबर्स लोग के लिए, अपना हिंदी वाला जो है, इस बार का जो डैक्स का रहेगा ना लूसीफर, इट विल बी फुल ऑफ हाई लेवल डैक्स। इस बार देखना, जो हाई लेवल डैक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस पावर बीआई वाले प्रोजेक्ट में, जैसे कि हम लोग स्विच यूज़ कर रहे हैं। स्विच मतलब उसका कैसे, इफ एल्स के जगह हम लोग स्विच यूज़ करते हैं। फिर हम लोग वी लुकअप देखेंगे, कैसे कि वी लुकअप कैसे पावर बीआई में यूज़ करते हैं, मतलब विदाउट राइटिंग वी लुकअप आप, यू हैव टू यूज़ रिलेटेड बाय द वे वी लुकअप के जगह, बट कैसे रिलेटेड काम करता है एज अ वी लुकअप, दैट टू विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्ट एंड डायमेंशन टेबल। मतलब हम लोग जो फैक्ट एंड डायमेंशन टेबल बनाते हैं ना, रिलेशन जो हम लोग क्रिएट करते हैं मॉडल व्यू में, पावर बीआई में, वो आप देखना, वो आप समझोगे, आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि क्यों, जैसे बोलते हैं ना लोग की स्टार स्कीमास है, स्नोफ्लेक स्कीमास है, इस टाइप का स्कीमास है। कल कल नहीं, मतलब जो 1 तारीख को जो आपके पास वीडियो आएगा ना, मेंबर्स वाला वीडियो लूसीफर, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि क्यों हम लोग ये कनेक्शन बनाते हैं, क्यों कनेक्शन बनाते हैं, उसका आपको आंसर मालूम चलेगा। और प्रॉपर वे में एक्चुअली जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड में जैसे यूज़ होता है, वहाँ पे आपको पता चलेगा। सो इट विल बी वेरी मच यूजफुल। जो वीडियो आने वाला है ज़रूर से देखना, 1 जनवरी वाला जो मेंबर्स वीडियो आएगा वो ज़रूर से देखना भाई, मतलब बहुत काम का है और बहुत डीप डाइव इसमें किया गया है काम, राइट? बहुत डीप डाइव काम है, प्लस हेल्थ केयर और फिनेंस वाला काम है। सो यू विल बी एबल टू सी कि कैसे फिनेंस सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर, लाइक फार्मा सेक्टर एंड हेल्थ केयर सेक्टर कैसे काम करता है एक साथ, तो वो आपको समझ में आएगा प्रॉपरली। बहुत कुछ चीज़ है मेंबर्स वीडियो में देखना, लेकिन 1 जनवरी वाला वीडियो तो ज़रूर देखना भाई, लूसीफर में बोल रहा हूँ। और कुछ डाउट होगा पूछना, और आने वाले टाइम में तो हम लोग वीडियो निकालते रहेंगे, दिक्कत वाला बात नहीं है आप लोग के लिए। नो वरीज फॉर दैट। और फॉर द मेंबर्स, फॉर द फ्री मेंबर्स, लाइक फॉर द
लाइक फॉर एवरीवन जो है, हम लोग धीरे धीरे ये सब चीज़ में आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंबर्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो फ्री वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें भी हम लोग आने वाले टाइम में ये सारे डेक्स फंक्शन लेके आएंगे। सो इट इज़ नॉट लाइक कि आप लोग पीछे रह जाओगे या यू विल बी लैगिंग बिहाइंड। इट इज़ नॉट लाइक दैट, यू विल ऑल्सो लर्न ऑल दोज थिंग्स। मैं रोज लाइब्रेरी पे काम कर रहा था, सो आई कैन अटेंड योर स्ट्रीम। सही है भाई, सही है। बोलो लाइब्रेरी में जाके म्यूट कर दो मेरा जो लाइव स्ट्रीम वाला सीन है, म्यूट इट एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग प्रॉपर है, सही रहेगा। मैं तो बोल रहा हूँ म्यूट करना बेटर रहेगा, क्योंकि फिर बाकी डिस्टरबेंस एंड ऑल, इसीलिए। और कुछ डाउट आउट होगा पूछना, लेकिन याद से भाई मैं बोल रहा हूँ, रिकमेंडेड टू ईच एंड एवरी मेंबर्स दोज हु हैव टूक द मेंबरशिप, भाई प्लीज 1 जनवरी वाला वीडियो जरूर देखना भाई, क्योंकि उसमें एक्चुअली अच्छा खासा डैक्स यूज किया गया है। मतलब एक्चुअल बोलते हैं ना कि हाँ डैक्स क्यों यूज करते हैं, उसमें आपको एक्चुअल मालूम चलेगा कि क्यों यूज होता है ऑल दो स्टफ्स। और ये प्रोजेक्ट बनाने में थोड़ा लाइक एफर्ट लगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लीज देखिएगा मेंबर्स वाला जो 1 जनवरी में वीडियो आएगा, एक्चुअली देखना भाई। एवरीवन, आई रिक्वेस्ट एवरीवन। ओके, किसी को कुछ भी डाउट हो लाइव स्ट्रीम में। और कितना दिन बचा है बाय द वे? 20 ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दिन और बचा हुआ है ये ईयर खत्म होने में। ओके, वी हैव वन मोर, इट्स रोजा लाइब्रेरी इन पाइथन। अच्छा, रोजा लाइब्रेरी, ये मुझे लगा कुछ अलग लाइब्रेरी, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं भाई। रोजा लाइब्रेरी का काम क्या है? कैन आई सर्च? रोजा लाइब्रेरी पाइथन। अच्छा, म्यूजिक एंड ऑडियो एनालिसिस। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि आप कोई लाइब्रेरी है वहाँ पे आपके लोकेशन पे, इसीलिए। अच्छा वेट, लूसीफर, आई हैव वन थिंग फॉर यू। मतलब मुंबई में एक इंटर्नशिप का है, अगर आप पावर बीआई में करना चाहो तो। ठीक है, आई हैव वन, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। एक इंटर्नशिप का था, अगर मुंबई में है तो अगर आप करना चाहो तो देखना। दैट्स इन मुंबई, राइट? आई विल सेंड यू दैट, आई विल सेंड यू, बिकॉज वो इंटर्नशिप और स्लीप कंपनी का है। इट इज जस्ट लाइक फॉर स्लीप कंपनी। आई विल सेंड यू दैट। ठीक है, तो फिलहाल के लिए किसी को कुछ डाउट? किसी को कुछ डाउट लाइव स्ट्रीम में? लाइक एनीबडी हैव एनी डाउट्स इन द लाइव स्ट्रीम? Anybody have any doubt in the live stream? Let me just see.
Okay, we have a hi Ashutosh, welcome to live stream. Hi Ashutosh, welcome to live stream. Some DA roles in big MNCs startup ask to fresher for AWS GCP cloud DE related tools. Can you explain about this? How AWS GCP uses as cloud in DA for deployment or any other deployment? First thing first, किए deployment के लिए like AWS GCP they are not used. Let me tell you one thing, AWS GCP are used in data analysis mainly as cloud platform, जैसे कि आपने बोला है mainly as cloud platform to store process and serve data, not for application deployment. ठीक है, it is not for deployment. First thing first, it is for storing the data, kind of data warehouse kind of things, means like storing data from different platform in a single, मतलब बोल रहा हूँ एक in a single location, so that from the single location you can use that data for your future purpose. ठीक है, and in real project raw data is stored in servers like AWS S3 or kind of like you told this GCP जिसको बोलते हैं cloud storages kind of thing, then into analytical database जैसे कि BigQuery, Amazon Redshift kind of thing. There what happens, the data analyst writes some SQL queries, they perform aggregations and all those things. ठीक है, in snowflakes is mostly used by data engineers. What actually happens in snowflakes, you know, all the data are there in a single place and you have to write SQL queries to find the output. Simple. If you don't have idea about SQL queries, not about you, like anybody don't have idea about SQL queries, then snowflakes will be very much tough for them, because basic SQL knowledge is required to run snowflakes. Okay, it is like that. ठीक, so that's the thing. So for data analyst, cloud storage means, I would say, working with cloud hosted data and SQL based analysis, and it is not for managing infrastructure or building data engineering pipeline. ठीक है, this is the thing, right? Lucifer, okay, I am interested. Okay, I will send you this. So I hope you understood it. I hope you understood it. Let's Okay, we have one query from Shiv Sai. A list of employees whose birthday is in next 30 days. Whose birthday is in next 30 days. Tell in MySQL method clearly with syntax. Okay, before telling in MySQL method, but first let me write that thing in PostgreSQL SQL. ठीक है. First, let me write that thing in PostgreSQL SQL. Then I will try to remember and tell you about MySQL. ठीक है, because it has been a long time I have been using MySQL. That's why I am well and good acquainted with PostgreSQL. Let me write the query first. ठीक है, or let me write the structure first. Then I will make sure I can understand. I will make sure you understand the thing in MySQL method. ठीक है, because directly if I try to write the MySQL method, I might create mistake or I might give you an error wala query. So first let me write the structure in PostgreSQL, then I will tell you about it. ठीक है, so simple. List of employees birthday in next 30 days. Next 30 days. ठीक है. So what could be the thought process? Next
30 days. So what I believe, next 30 days matlab, if I take like this, 19 December 2025 till next 30 days. This would be my thought process if I take it in a practical way. So it is like current date, current date, and means the birthday should be between current date and current date plus 30 days. ठीक है, it should be like this. ठीक है, the birthday should be in between current date and current plus 30 days. This is my thought process. ठीक है, I won't be writing all those things. I will directly write the filter part, like where whatever the date column you are having, date column, where the date column between, sorry, date column between, I will write current date and then current date plus interval में 30 days. This is for post GRE SQL. Don't get confused in that. ठीक है, so this is my thought process. ठीक है, current day plus current plus 30 days. ठीक है, right now let's think about MySQL. ठीक है, let me just remember the MySQL part, because as I've told you, it has been a long time, like a really long time I have touched MySQL. I don't know last time when I have used it. So I won't be writing all those things. I will just use all the query after where. ठीक है, where current date ना, तो where the date column, where date column between current date you write how in post gre, sorry, MySQL CURDAT. This is the thing, current date, and then how you will do, you will add 30 days here. ठीक है, you will take date add, just check once this one. ठीक है, date add current date, then इंटरवल में आई थिंक, इंटरवल में ब्रैकेट नहीं है शायद, आई डोंट रिमेम्बर, चेक वंस. ठीक है, 30 डे लाइक दैट. इज इट द थिंग, मतलब वेयर डेट कॉलम बिटवीन CUR डेट इज करेंट डेट एंड डेट ऐड, यू विल ऐड द डेट, ऐड मतलब 30 days you will add with the current date. ठीक है, 30 days you will add with the current date. ठीक, do one thing, whatever column you want to add you can add from in select from the table, whatever table name you are having, like whatever table you are using in your database, write that table name. After where you take this thing and write and see if it is working or not. It will work because as per my thought process, I know how things will work. You will take the current date and till the next 30 days, matlab current plus next 30 days. If someone birthday is coming, you told employees like someone birthday is coming, it give that employee's name in output. ठीक है, this is the thought process right now. This thought process I have used in, I can use in any of the SQL environment. For MySQL, I know current date का CURDAT रहता है, QR date, and if you want to add some days in the current date, then you have to give this function. I also know this,
Means this is the basics one, that's why I'm saying date add. In date add you have to write, you have to give two terms, ठीक है. पहला term like in what you have to add the date, so I have to add the date in current date, comma in second data मतलब second input you have to give how many days you have to add, so we have to add 30 days, like interval of 30 days. Check this thing and see if it is working or not. ठीक है, check these things. Okay, we have one more query from Ashutosh. I think these are for D roles like Apache, Spark, Hadoop for data warehouse. This thing na, you are saying na Spark, Hadoop. For this thing we require PySpark. ठीक है. If you know PySpark, then these things are used. And in PySpark it is nothing. Just you will be writing all the SQL queries in Anaconda. ठीक है, मतलब Jupyter Anaconda. ठीक है, that is the thing. You will be writing all the SQL queries in Jupyter Anaconda. ठीक है, simple thing. Means the name is like कि चलो PySpark है, मतलब it would be something lot of logic required, ऐसा नहीं है. In PySpark it is just like you will be handling around मतलब more than 50 GB का data, more than 50 GB का data you will be handling, not in SQL but in Python. In Python how you will be handling, you will be handling this data set with the help of SQL queries. ठीक है. And the best part in PySpark is there is like if you don't use any loop or something, मतलब loop if else wala loop kind of thing, it will be also okay to find out the output. मतलब in SQL you have to write all the SQL queries group by everything is there. Just use it and find the output. ठीक है. So this Spark, Hadoop and all, we need PySpark for that. What I know about it. ठीक है. That's the thing. And data engineering का main work is what? Handling good amount of heavy data. That's it. And this are also, let me tell you, part of data engineering role. What we say this Spark and Hadoop. स्पार्क एंड हडूप मतलब पूरा डेटा इंजीनियरिंग का जो रोल है ना, मतलब लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग वेर एवर यू विल बी हैंडलिंग मोर देन 50 GB का डेटा और 100 GB का डेटा, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग. मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट्स एज नो ना इन वेयर हाउस, मतलब इन डेटा वेयर हाउस you will be handling lots of data from lots of sources. मतलब in simple technical terms I could say that कि distributed data set you will be handling, or it is better to say कि large scale distributed data processing you will be handling. ठीक है, in these things. ठीक. So it is a kind of, if you go more deeper into this you will be able to understand like you are actually building and maintaining the data warehouse. That's it. You are actually building and maintaining the data warehouse. That's it. That's it, nothing else. And for that भाई SQL and Python का जो basics है, that only we require. That's it. If you know these things it is good to go. ठीक. Right. I hope you understood it. So that's the thing. Okay, thanks. Actually I heard all this tool, I thought anything like very big. अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है. फॉर क्लैरिफिकेशन, फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि दिस कंफ्यूजन ना, दिस इज वेरी मच कॉमन इन each and everyone mind, because the thing is most of the job description mix data analyst and data engineering tools which create unnecessary
fear in freshers, let me tell you, unnecessary fear. Let me tell you this thing happened, matlab, this is the internal thing. I am saying this to each and everyone, very much internal thing. They say we need this thing, we need this thing, this that lot of thing. I have also had this kind of fear, but I used to also think I also have a thing in my mind कि अच्छा ठीक है, if they need all those things, then in 1 hour of interview, how will they say कि work in this thing, this, I mean to say work in the Snowflakes का data warehouse या Amazon Redshift, where this tools or this services cost more than anything. मतलब if you think about the cost, it goes in like lakhs and crores kind of thing. मतलब if you take the membership and all, corporate membership, मतलब obviously we cannot take it because we are not a corporate company, ठीक है. So that only I had in mind कि if they're asking for all these things, so will that recruiter give me the access of all these tools and tell me to work in that 1 hour time? So it is just kind of unnecessary fear, what I believe. And there is only one important thing to remember, is that as a data analyst, our core value lies in SQL, data understanding, business understanding, converting data into some kind of useful things which you can create a story and tell in front of your stakeholders or your manager or your client. Okay. And like you have told the right thing, like the Spark and Hadoop, these are usually handled by data engineering teams. They have different teams which handle all those stuffs. And Baki, yeah, that's all about it. So no need to worry about. ठीक है? Sorry. So anybody have any more doubt in the live stream? Okay, we have one query from Shiv Sai. I sent code to mail for. Okay, let me check. अच्छा, आप जो इसका है क्या 30 days वाला शायद आप पूछ रहे हो. करेक्ट करेक्ट, लेट मी चेक. Got it. AI show this long code. मिल गया. I have received your code. What they are saying. Let me check once. Let me download it. ये इतना टाइम लग रहा है. It is taking so much time to this, what we say, load. That's why I'm saying, because of this VPN kind of thing. Mm, Let me understand. See, end line I can understand, between current date and date at current date interval 30 days. So you have employee ID, employee name, but let me write one thing. Me a lot of things they've added here. मतलब current date say minimum, then they have changed it into month, day, regex kind of thing they have used, percentage y and all. मतलब this, why I don't know why they have used this percentage y, percentage m, percentage d. I don't know this why they have used. Okay, do one thing, Shiv, do one thing. Whatever I have given, ठीक है, this select and from query you write,
from your own side, whatever I have given, let me write it. ठीक है, where take this, because what I can see, you have birth date करके column. ठीक है, do one thing. If the AI query is giving you in month and day, na, let me do this in a easy way and use this query right now. ठीक, see, thought process is same. Thought process will be same, and I will use the same thought process here. Current date and interval 30 date. ठीक है, but one thing I can see right now, it is like month, year, month, date. मतलब ये वाला जो चीज है, I have seen right now. So I will modify it a little bit. ठीक है, I right now I came to know the column name is birth date. So and month day भी है. तो do one thing, format it. ठीक है, let's format it, because what I believe, you might have given the question to AI and AI might have received this kind of data कि month और day में change करना है. Let's do it in a easy way, where date format, I will change it. I will change the birth date का column into month and into date. ठीक है, where के बाद मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं. I am just taking this column. I am just taking this column. Addition, what I am doing, I am just converting the column in month and day. ठीक है, thought process will be same. Let me show you. Where this between, see the thought process between current date, but I will convert this thing in month and day. Current date, month and day, between this, and right now I will also convert this addition, date format. I will be adding the date. ठीक है, adding मतलब कैसे, date add, date add के अंदर I will add this current date, interval, इंटरवल में कितना 30 डेज था क्या, बर्थडे इज इन द नेक्स्ट 30 डे. ठीक है, इंटरवल 30 डे. ठीक है, आई एम taking the same thought process, so no need to worry about. I will just take the same thought process and I will be making sure you are getting the true output. I've used the same thought process. ठीक है, क्या thought process है, birth date between current date and interval 30 days. But as I've seen your code right now, as I've seen your code, and what I believe that you want to because see, AI is also giving the same thing कि मंथ और डे में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड व्हाट आई बिलीव योर क्वेश्चन माइट बी लाइक दिस कि मंथ और डे में कन्वर्ट करना है. तो आई हैव कन्वर्टेड द डेट to month and day and use the same thought process. So make sure you use it. ठीक है, make sure you write this thing. Let me write it properly. Where date format, is it visible? चलो, where date format, birth date, month, day, between date, format, current date, month and day, and date sorry, and date format, date add, just a minute, date add, current date, interval, t day.
एक मिनट, लेट मी सी वंस लाइक इफ इट इज ओके और गुड टू गो. ओके, सेम थिंग आई हैव रिटन इन हियर, मतलब रिटन इन दिस, क्या बोलते हैं, लाइव, मतलब लाइव चैट. ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट इट एंड सी इफ इट इज गिविंग यू द प्रॉपर आउटपुट क्या. ठीक है, सी दैट थिंग. ठीक है, एक बार चेक करो तो. आई हैव यूज द सेम थॉट प्रोसेस बट विथ एन टच ऑफ द एआई का रूल, जिसमें कि शायद एआई ने मंथ और डे में किया, तो आई हैव ऑल्सो कन्वर्टेड द मंथ एंड डे इन अ सिंपलर फॉर्मेट. ठीक है, चेक वंस. एक बार आप चेक करो और बोलो कि सही है कि नहीं. What's this? Check once, like is it working or not, Shiv? Please check once. ठीक है, एंड टेल मी कि लाइक इज इट वर्किंग और नॉट. ठीक है. Check once. Shiv, like, can you check once and see like the output is okay or not? And please inform here, like, I want to see like it is it correct or not. ठीक है.
So like is it okay right now? Like, are you getting the output from there? Okay, we have received one more query. I sent the code in mail again, but it shows correct, but no rows written. Okay, no rows written. Let me see. Let me check once. Let me check once. It is not loading. I have received your mail. ठीक है? I have received your mail. Let me download it. Let me download and see. Why it is. Wait. Okay. So it is like select employee ID, employee name, date. Okay. Right. First thing first. Write this thing. Write the birth date as well. In select, write the birth date. ठीक है? In select, you have written employee ID, employee name, na? So you write employee ID, employee name, and birth date also you write. ठीक? ठीक है? Okay, and one more thing, shift side, there is one more error. कहाँ गया? Sorry. What I can believe, there is one more error here. ठीक है? Error तो नहीं 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 नहीं, error नहीं है. Sorry, there is no error in this. First write birth date in this and let's see if it is working or not. ठीक है? Do one thing. Do two things, I mean to say, not one thing. First thing is write in select statement, write this column birth date. ठीक? If then also it is not working, then write like this. ठीक है? Write like this. Format the date. ठीक है? Date format. Birth date. Write like this. ठीक है? First, do this thing. First, write the proper column name, Shiv. If it is working, giving you an output, then okay. If not, then write the column name in a formatted way. मतलब you format that column name in month and day and then see if it is working or not. ठीक है? Check that. ठीक? Check once. Do this two changes. Like after select, write this thing. If you are getting the output, okay. If not, format this. मतलब write this thing. Do one thing. If
you are getting the output from this column, just writing this column birth date, it is okay. If you are not getting the output, cross this thing, matlab delete this column, write in place of birth date, write this thing date format birth date in month and day. Why I'm saying, because we have converted this date format into month and day. So what I believe, if you are not getting output in this writing the birth date, you can convert that birth date into month and day, and then you can get the output. Okay, check that once. Because the thing is, in my SQL, like, lots of stuffs you have to check and out, like you have to check and then write. That's the issue. Okay, that's why I am just giving you two uh, scenarios where you have to check twice. Okay, you have to check two scenarios. Okay, first thing first, check the scenarios, because still right now you are getting the table but not the data in the output. Okay, there is no data in the output, but still you are getting the table column name and all. Okay, but still I know in MySQL it is like, it is not mistake of MySQL or anything. Each and every SQL environment have their own plus point and minus point, so that is the thing. Okay, so I would recommend you to write this thing first birth date and see if you're getting the output. If not, then delete this birth date, and in place of birth date, write the converted birth date, that is like converted into month and day. Okay, write this and let's see if you get the output. Okay, we have one more query. Yes, I add birth date and insert date format already in code, but I don't know it's showing the same. But in the output, what I can see, it is showing employee ID, employee name, and hire date. But the thing is, the employee ID, employee name, and hire date is in the upper query. That's why I'm saying. Like, can you take a screenshot once again and send it? Because in the output, in the result grid output, I can see employee ID, employee name, and hire date, which is actually the output for the 18th number query. Because in select you have written employee ID, employee name, and hire date from employees 3 करके. So for that column, I mean for that query, you are getting all those column name what you have written in select. But I want the output for this query. Okay, the query that you have selected. Because if you select that query and execute it, you might have received in the output like employee ID, employee name. Okay, so do one thing, right? Execute it and see if you are getting the I want the screenshot where you are having the column name as employee ID, employee name, and birth date. So birth date is exception, like I have given you two scenarios. So in birth date, and second thing is the date format. So try these two things. Okay, right? These two things up, check karo and tell me like is it working or not. Okay, hi, welcome to live stream. Hi Piyush, welcome to live stream.
हाँ ब्रो, सीक्वल में डेटा क्लियर कैसे करते हैं और डुप्लीकेट वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, की डुप्लीकेट वैल्यूज़ आप किस बेसिस पे निकालना चाहते हो ये मेरे को आप बताओ, मैं हेल्प कर दूंगा। जैसे डुप्लीकेट वैल्यूज़ किस बेसिस पे निकालना है, किस कॉलम के बेसिस से निकालना है, उससे बताओ, मैं बोल दूंगा, ठीक है? नहीं तो एक कॉमन फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ, सिंपल, सिलेक्ट, जो भी कॉलम नेम रहेगा वो आप कॉलम नेम लिखो। ये कॉमन फॉर्मेट है, बट स्टिल जब डुप्लीकेट वैल्यूज निकालने बोल रहे हैं तो आप बोलो किस कॉलम के बेसिस से निकालना है, उसी हिसाब से मैं बता पाऊंगा, ठीक है? क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज को निकालना के लिए आपको, यू हैव टू गिव द, मतलब क्या बोलते हैं, एक्चुअल थ्योरी किस बेसिस पे आपको डुप्लीकेट निकालना है, ठीक है? इसीलिए, ठीक, किस कॉलम के बेसिस पे, किस आउटपुट पे आपको डुप्लीकेट निकालना है। नॉर्मल बेसिस बोल रहा हूँ, सिलेक्ट कॉलम नेम, काउंट द नंबर ऑफ कॉलम्स फ्रॉम द टेबल नेम, ठीक है? फिर आपको इसमें ग्रुप बाय करना है क्योंकि आपने एग्रीगेट वैल्यू दिया हुआ है, इसीलिए ग्रुप बाय द सेम कॉलम नेम, उसके सॉरी, वेयर नहीं होगा, हैविंग होगा, क्योंकि एग्रीगेट वैल्यूज है। हैविंग काउंट ऑफ दिस ग्रेटर देन वन। इस तरीके से, ये कॉमन तरीका है निकालने का डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है? ठीक है, आप ये बताओ कि किस बेसिस पे आप मतलब निकालना चाहते हो डुप्लीकेट, किस बेसिस पे, वो आप बताओ, ठीक है? मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो anybody have any doubts in the live stream? Okay, we have one more query. Shift. I sent you again two mail. One is AI code and one is self code. Let me check once. Okay, in the self code we have we have written with no values, what I can see, and in the AI we have written. Okay, okay. Right now I understood why you are not getting the output. ठीक है. See, shift. The thing is, we are taking care with the current date. ठीक है. We are taking care with the current date, and what is the current date? It is 19/12/2025. ठीक है. And the output that you have received is 28/12/1996. That is the reason we are not getting the output, because what we are taking date between current date and current plus 30, ठीक है? current plus 30 days, ठीक है? And current date is what, in what year? 2025. So current plus 30 in what year? 2025 plus 30 days, it will move to 2026. So as you can see, the output is in what? 1996, ठीक है? That is the reason, right? That is the reason you are not getting the output. I hope you understood it, ठीक है? So for this kind of scenario, you have to
टेक केयर ऑफ द, क्या बोलते हैं उसको, मतलब ईयर बेसिस में यू हैव टू टेक केयर ऑफ द आउटपुट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द आउटपुट इन ईयर बेसिस, ठीक है, इन ईयर बेसिस यू हैव टू टेक केयर ऑफ द आउटपुट, ठीक, दैट्स द थिंग, ठीक है। तो ईयर बेसिस के लिए आपको यू हैव टू डू सम ऑफ द क्वेरीज, लाइक I have to take care of that as well. For current date, I can tell you, but in MySQL year format, I have to take care of it. See, for now, if you ask me, in PostGRE SQL, I can help you out for this kind of date. Matlab for dates where it is like 1996 or 1997. I mean to say, it is asking next 30 days and next 30 days with respect to the date that is present there, ठीक. So I can help you out in PostGRE SQL related to that, but related to MySQL I have to check that out because the queries will be different, ठीक है, that is the thing. And what would be my thought process, let me tell you here what would be my thought process. I will extract the year from the date column, ठीक है, whatever date column or whatever date column you have in the table, I will extract the year from that, ठीक है, I will extract the year and then I will add 30 days from that. I mean sorry, I will extract the uh, क्या बोलते हैं, date, month and year from the column that is present in the table, ठीक है, then I will add 30 days in that. Earlier what we are taking current plus 30 days, right? Right now when I see your output which is like the dates are in 1996, in this way what I will do, from the date column I will extract the year, I will extract the month, I will extract the day, then I will add from the extracted year, month, day, I will extract the year, month and day and I will add 30 days in that and then find the output, okay. That is the reason I am saying like why we are not getting the output even after writing the correct thought process and all. For PostGRE SQL I can help you out in this because I know how to find the output in that, but the thing is in MySQL I have to check because in MySQL the query will be different but the thought process will be same. Thought process matlab from the date column you have to extract the year, month, day, then add 30 days in that, ठीक है, you will get the output. ठीक है, I can help you out in that, but the thing is कि I know in my मतलब PostGRE SQL I know about it. For MySQL I have to check that out first. ठीक है. If you want for PostGRE SQL I can give you the output or give you the query, but for MySQL I have to check that out because for MySQL it has been a really long time
that I have used, but this would be the thought process. Take, you can use this thought process in your MySQL database, or I mean to say MySQL environment, and use it. Okay, we have one or two more queries from Piyush. ब्रो, जैसा हम पाइथन में डेटा क्लीन कर सकते हैं, नल वैल्यूज हैंडल कर सकते हैं, डुप्लीकेट डेटा को डिलीट कर सकते हैं, ऐसा सीक्वल में, हाँ ऑब्वियसली यू कैन डू इट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। नल वैल्यूज का ना, ठीक है मैं बता रहा हूँ, जो नल वैल्यूज हैंडल करना है, ठीक है। आप जब नल वैल्यूज हैंडल कर रहे हो पाइथन में, सिंपल पाइथन मतलब पैंडास, ठीक है। कैसे करते हो आप, जो भी डेटा फ्रेम रहता है उस पे आप क्या डालते हो, इज नल डालते हो, ठीक है। इज नल डालते हो, ठीक। और इज नल डालने के बाद आप उसमें कुछ एक नल के वैल्यूज को पुट करते हो, जैसे आपने बोला ना नल वैल्यूज को हैंडल करना है, तो आप इज नल करके पाइथन पैंडास में फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक। सेम चीज सीक्वल में आप कैसे फाइंड आउट करोगे, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल नेम वेर वेर कॉलम नेम लिखना इज नल। तो ये हम सीक्वल में ऐसे फाइंड आउट करते हैं, वेर कॉलम नेम इज नल, और ये हम लोग पाइथन में ऐसे फाइंड आउट करते हैं, कॉल इज नल करके, ठीक है। सेम चीज, जैसे आपको कुछ प्लेस होल्डर देना है, प्लेस होल्डर अगर देना है नल वैल्यूज में, पाइथन में कैसे करते हो, फिल एन ए करके लिखते हो, ठीक है। फिल एन ए, इसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है कि क्या, कौन से नंबर पे आप लाइक फिल एन ए करना है, ऑल उस तरीके, मतलब आई मीन टू से यहाँ क्या डेटा रहेगा, मतलब वो एन ए डेटा में आपको क्या डेटा फिल करना है, सपोज उसमें फिल करना है 1 2 3, वो डेटा यहाँ लिखोगे। सेम सीक्वल में आप कैसे करोगे, अपडेट क्वेरी लिख के, अपडेट टेबल नेम, फिर आपको देना है सेट कॉलम नेम लिखना है, उसके बाद जो भी आपको वैल्यूज देना है, जैसे ये सारे वैल्यूज है यहाँ आपको लिखना है, वेर वेर जो भी कॉलम नेम में नल रहेगा, ठीक है, जो भी कॉलम नेम में नल रहेगा वो जगह पे आपको ये सारे प्लेस होल्डर दे देना है, ठीक है। दिस इज द थिंग, ये नल वैल्यूज हैंडलिंग है, सिंपल। अब आपने क्या बोला आगे, डुप्लीकेट डेटा को डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट डेटा सिंपल, पाइथन में कैसे रहेगा, डेटा फ्रेम में जाओगे, सिंपल आप जाओगे डुप्लीकेटेड लिखोगे इधर, ठीक है, यू विल गेट द आउटपुट। सेम चीज सीक्वल में कैसे करोगे, सेम चीज सीक्वल में करोगे, सिलेक्ट फिर कॉलम नेम, बट सीक्वल में क्या है, आपको कॉलम नेम बताना पड़ेगा कि किस कॉलम से आपको डुप्लीकेट हटाना है, ठीक है, वो आपको बताना पड़ेगा, तभी मैं प्रॉपरली हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है। फ्रॉम टेबल नेम, राइट, ग्रुप बाय कॉलम नेम हैविंग count of everything is greater than 1. This is how you find the duplicate in Python, and this is how you find the duplicates in SQL, इस तरीके से, ठीक है। और आप आपको डिलीट करना है, राइट, डिलीट डेटा करना है, तो सिंपल है, डिलीट डेटा के लिए पाइथन में क्या है, फंक्शन है ड्रॉप डुप्लीकेट करके, ड्रॉप डुप्लीकेट करके पाइथन में फंक्शन है, सॉरी ड्रॉप डुप्लीकेट्स, नॉट डुप्लीकेट, ड्रॉप डुप्लीकेट्स करके। तो ऐसे डेटा फ्रेम डॉट डुप्लीकेट्स, बट उसमें क्या है, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा रखना है, पहला वाला रखना है कि दूसरा वाला। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको सबसेट में कॉलम नेम देना पड़ेगा, कौन सा कॉलम नेम है वो देना पड़ेगा। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कौन सा रखना है, तो कीप इक्वल टू, जैसे मैं बोल रहा हूँ मुझे फर्स्ट डेटा रखना है इसीलिए, या तो अगर मेरे को सेकंड रखना है तो कीप इक्वल टू सेकंड बोलूँगा, और फर्स्ट
उड़ा दूंगा। इस तरीके से आपको पाइथन में बोलना पड़ेगा ड्रॉप डुप्लीकेट्स जब आप दोगे, ठीक। बट सेम चीज अगर आप सीक्वल में लिखोगे तो आप सिंपल लिख सकते हो डिलीट फ्रॉम, आई मीन डिलीट फ्रॉम द टेबल नेम, राइट। उसके बाद यू कैन डू द वर्क, राइट, ये सीक्वल में, ठीक है। बट द थिंग इज कि सीक्वल में आपको बताना पड़ेगा किस बेसिस पे आपको डुप्लीकेट्स डिलीट करना है, किस बेसिस पे। सीक्वल में यही बस एक प्रॉब्लम है, उसमें थोड़ा स्पेसिफिसिटी चाहिए होता है। पाइथन में उतना स्पेसिफिसिटी नहीं चाहिए होता है, इजीली हो जाता है। इसलिए बोलते हैं पाइथन इज मच मोर इजियर देन सीक्वल। उतना ज़्यादा आपको कमांड भी लिखना नहीं पड़ेगा, राइट, दिस इज द थिंग। तो आई होप यू गॉट इट, मतलब कैसे नल वैल्यूज हैंडल करना है, डुप्लीकेट डेटा को डिलीट करना है। तो सीक्वल में दिस इज हाउ वी कैन डू इट, पाइथन में हाउ वी कैन डू इट, ठीक है। Okay, we have one query. I want to practice on your SQL assessment, but I use MySQL. It's okay for my MySQL person, but if okay, explain how start assessment like beginners. बिगिनर के लिए मतलब जो असेसमेंट आप जो देख रहे हो असेसमेंट यहाँ पे, दिस असेसमेंट लाइक आई हैव गिवन द आंसर्स एज वेल, ठीक है। आई हैव गिवन द आंसर्स फॉर इट। सो फॉर दिस असेसमेंट डू वन थिंग, if you check out my answer you can at least get the thought process of finding the output, ठीक है। you can get the thought process of it, like you have given me question like you have to find this kind of thing, you have to find the output with the current date to like 30 days after that anyone birthdays is there or not. Thought process will be same for everything, ठीक है, thought process will be same, query writing would be different. So I would suggest you to check out my answer, like whatever answer I have given in the answer ka folder, check out that thought process. If you are not able to find the thought process in that, you can either ask me, ठीक है, I can help you to find out the thought process or understand the thought process, and after that you can write the SQL query in MySQL platform, मतलब MySQL workbench. If not, I have to think and tell you about the queries, ठीक है, that is the thing. Once you understand the thought process it will be easy for you to do the assignment, I mean to say. So answer have been given to you in the Google Drive link, same Google Drive link. You can check the answer and get the thought process or the logic or the concept, and you can write the query by yourself. If there is any error you can ask me, I will take the thought process. It will take some time for me to write the MySQL queries, ठीक है। It will take some time for me, ठीक है, because as I've told you, like it has been a really long time I have touched MySQL. Let me tell you that I have been working on PostgreSQL SQL from so many years, and till date I am using it. That's why I'm saying. Hi others, welcome to live stream. ब्रदर ये बताओ, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जहाँ से मैं ट्रेनिंग कर रहा था उधर से टीचिंग करके सेशन लेना है, पर मुझे टीचिंग स्टाइल बिल्कुल आता नहीं है, क्या करूँ कुछ बताओ। टीचिंग स्टाइल रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ, एक दो बार टीचिंग स्टाइल के लिए यार तो प्रैक्टिस चाहिए भाई। टीचिंग स्टाइल के लिए आपको एटलीस्ट एक एटलीस्ट 1 मंथ, मैं तो बोल रहा हूँ एटलीस्ट प्रैक्टिस चाहिए, स्टेज स्पीकिंग काइंड ऑफ थिंग। मतलब जो बोलते हैं ना स्टेज स्पीकिंग जिसको बोलते हैं, अगर ये स्टेज स्पीकिंग वाला चीज़ आपका हो गया तो आप टीचिंग इजीली कर लोगे, राइट।
तो अगर आप ये 1 महीने में ये कवर अप कर पा रहे हो, स्टेज स्पीकिंग जिसको बोलते हैं, मतलब स्टेज में खड़े होके समझाना सामने वाले को बिना डरे, तो फिर इट इज गुड टू गो। और यही मेन है टीचिंग लाइन में, राइट? ठीक है ना, दैट्स द थिंग। तो देखो, अगर स्टेज स्पीकिंग वाला चीज, अगर ये वाला चीज आप ला पा रहे हो अपने अंदर विद द हेल्प ऑफ गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, देन यू कैन गेट दैट आउट, मतलब यू कैन डू टीचिंग वेरी नाइसली। ठीक है, क्योंकि आपको एनी हाउ सबके सामने खड़े होके पढ़ाना पड़ेगा और डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि आप पढ़ा रहे हो, ऑब्वियसली सामने वाले को डाउट आएगा भाई, सीरियसली। यू कैन चेक आउट इन माई लाइव स्ट्रीम एज वेल, लाइव स्ट्रीम में डाउट्स आ रहा है। और हाँ, और एक चीज, यू शुड हैव अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज इन वॉट एवर टॉपिक यू आर गोइंग टू टीच। मतलब सीक्वल, पाइथन, पावर बीआई में अच्छा खासा नॉलेज रहना चाहिए। अच्छा खासा मतलब ऐसा नहीं कि पूरा A to Z 100% नॉलेज रहना रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। मेरे पास खुद सारे, देखो यहाँ पे जैसे शिव ने मेरे को जितना डाउट पूछा, मेरे को थॉट प्रोसेस आता है, क्वेरी लिखना आता है, बट द थिंग इज कि अब अलग अलग इन्वायरमेंट पे जैसे है, जैसे सीक्वल, माई सीक्वल इन्वायरमेंट हो गया, उस पे कैसा क्वेरी लिखना है, दैट इज रियली टफ फॉर मी। बट एनी हाउ आपको थॉट प्रोसेस आता है समझाना, दैट इज गुड टू गो। तो इसीलिए अगर आपको उस टॉपिक का प्रॉपर नॉलेज है, आगे का हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो चीज का आपको ध्यान रखना है आदर्श। फर्स्ट चीज ये है कि स्टेज फियर या तो स्टेज स्पीकिंग वाला जो स्किल्स है वो डेवलप करो इन 1 मंथ। सेकेंड चीज, साइड बाय साइड मेक श्योर कि आपका बेसिक्स अच्छा खासा स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि एनी हाउ अगर आप पढ़ाने जा रहे हो तो आपके पास डाउट आएगा, और डाउट आपको सबके सामने क्लियर आउट करना पड़ेगा। तो वो सबके सामने डाउट क्लियर आउट करना एक थोड़ा रहता है, फियर फैक्टर रहता है, आई कैन अंडरस्टैंड इट। स्टार्टिंग में मेरे को भी था, बट मैं तो मैथ्स पढ़ाता था, बट मेरा क्या है कि मैथ्स वाज वेरी स्ट्रांग टिल 10th। मतलब अभी भी स्ट्रांग है मैथ्स मेरा, 10th, क्लास 10 तक सही है, पढ़ा सकता हूँ सामने वाले को, डाउट आएगा तो भी क्लियर आउट कर सकता हूँ। तो उतना कॉन्फिडेंस था। तो वही बात है, फर्स्ट थिंग, पहला स्किल्स आपको स्टेज स्पीकिंग का लेना है। दूसरा जो है, बेसिक्स का ध्यान रखना है। जो भी टूल्स आप पढ़ा रहे हो, अगर आप सपोज सीक्वल पढ़ा रहे हो, सीक्वल में अब अगर आप जैसे कोई भी सीक्वल डेटाबेस पे आप काम या पढ़ा रहे हो सामने वाले को, उस चीज़ में आपको अच्छा खासा नॉलेज रहना चाहिए, वरना इट विल बी एन इशू, कि फिर डाउट क्लियर करना में इशू हो जाएगा। लेट मी टेल यू दैट। तो we have one more query from Ashutosh. Nowadays, some DA interviews conducted by AI, not human, in MNCs, other US based companies. Any guidance? नॉर्मल ये है कि देखो, जो AI वाला इंटरव्यूज होता है ना, दे आस्क यू अ क्वेश्चन, मतलब सामने एक ह्यूमन बीइंग रहेगा, they will ask you a question and your answer will be recorded. That's the thing. Your answer will be recorded. That's it, nothing else. ठीक है, दिस थिंग्स Amazon have already started, मतलब whatever I know, and in this way it is like कि they will give a time frame, suppose 5 minutes time frame. In 5 minutes time frame you can repeat the question to some specified amount of times, like 3 times you can repeat the question, kind of thing, and your answers will be recorded. Your answers matlab the recruiter or the guy who is at the back end, they will be taking care of the camera part. ठीक है, because due to lots of मतलब बोलते हैं ना स्कैम फ्रॉड के कारण, because in fraud what happened, the candidate, what they do cheating, and there you can see their eyesight goes here and there and all those things. So to reduce that, they have kind of, I would say, they have kind of find out the solution, where they will take care of your eyesight, your way of answering the, and way of answering the question,
and it will be recorded for a good amount of time, so that in future if some third party comes and check कि you have done, मतलब not you, like any candidate have done any forgery or a fraud kind of thing during interview process, they can directly lay you off. That's the thing. So that is why these things have been found out, and there is no tips and guidance for it. Just go prepared. That's it. In place of human, an AI or a recorded sound or a question will be coming in front of you. Just answer it. Your answers will be recorded. Your face will be recorded. Your video will be recorded. Your eyesight will also be recorded. Plus, microphone will also be open up so that if there is someone else at the side or someone, then they can also find out that thing. So, to reduce the forgery and scam, they have come up with this kind of scenario where AI will ask you a question, and the real human being who is behind the scenes, they will take care of the visual or the camera part, where the candidate is like giving the answer in a proper way or not. That's it. So just go prepared and give the answer. That's it. No worries. And the best part is human being won't be there in front of you. So there will be, I would say, confidence will be huge at that. I mean to say, see, if some human being is in front of you, real human being asking a question, at that time fear will be there ki what question this guy will ask, what he will think about my answer, like this kind of fear will be there in the mind. But if a AI agent or a AI will ask you question, you know कि अच्छा ये तो AI है, they don't have feelings, they don't have emotion, they don't have anything, I can give answer properly. They won't do any cross question kind of thing or kind of any emotion or face expression in kind of things in front of me, so you can confidently give the answer. This is the one plus point which I find out in this AI interviews. ठीक है, so there is no it's not like there is no issue in that. There is no tip or guidance, just go prepared. That's it. That's it, nothing else. So, okay, we have one query. Can you send the drive link for SQL? Okay, let me send. Actually, this is the video link. Okay. In this video link, you will get the drive link. Let me give you the Google Drive link as well. Hmm, where is it? This is the Google Drive link. ठीक है. So Google Drive link is there, and also the this thing. Your video link is also there. ठीक है. So anybody have any more doubts? Okay, it's 9:20 right now. Let's close the live stream because I have to go for the meeting at 9:30. That's why I have not seen the time. So let's start a new live stream tomorrow. ठीक है. चलो everyone. Bye bye everyone. I'm being late. Only 7 minutes is there. Okay, let's meet tomorrow in a new live stream. ठीक है. चलो bye bye everyone. Thank you for joining my live stream and asking me doubts. Thank you for that. So I'm closing my live stream and good night everyone.